Assalamu alaikum. Welcome back to another video in which we are going to do some deep learning models into this dataset, which is quite a tabular dataset, lung cancer prediction dataset modeling. And there is one addition. In the previous video, I treated this problem as a regression problem, and now I'm gonna treat this problem as a classification problem because my dependent variable, which is the target variable, it was encoded as, here you can see, lung cancer risk 101010, although I wanted to treat it as a continuous variable but now I'm gonna treat it as a classification variable. So let's start from there. Let's open this in the new and create notebook. So I'm gonna copy this and I'm gonna rename the notebook as this and classification. ओके जी, आई थिंक करेक्टर पूरे हो चुके हैं. नो इश्यू इन दैट, करेक्टर तो पूरे हो गए. चलें जी, ठीक हो गया. अब मुझे इंपोर्ट्स चाहिए. सबसे पहले तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ सारा का सारा. मार्कडाउन फाइल इंसर्ट की मैंने और फिर उसके बाद मैंने इंपोर्ट्स लेनी है, विच आर दिस. I'm gonna drag and copy here, Control C and Control V. So these are my imports. And after that I have this data set. I'm gonna open it, this data set, view data set. I'm gonna control the link, add input here, paste the link here, and adding this data source. And after that, going back to my notebook, data. In the data cell, I'm gonna paste my data code, which is about defining the path and viewing the data. Here it is. So we have it here. Next thing is we need to do this, Control C, Control V, and after that here. And I'm gonna copy the code of this cell. यहाँ पर एक और चीज़ का क्या नाम है, एडिशन होगा, जो कि मेरे जहन में बाद में आई थी. यहाँ पे चलते हैं जी, इस चैट में. I need to scale the data here using standard scaler. मैं पूरे डेटा का स्केल सेम करने वाला हूँ क्योंकि मैंने न्यूरल नेटवर्क्स की मॉडलिंग करनी है, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी तब होती है जब मैं उनकी स्टैंडर्ड स्केलिंग कर दूँ. चलें जी, न्यूमेरिकल कॉलम्स की करेंगे. ओके, यार राइट. इस चीज़ को कॉपी करते हैं जी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. होपफुली हो गई है. ये क्या दे रहा है जी, स्केल वेरिफिकेशन ट्रेनिंग सेट. ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ दी जा रही हैं शायद. इनका मीन और इनका क्या नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जा रहा है around to the 5 decimal places. And let's see, yeah, here it is. मीन तो 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है. ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि हमारा जो डेटा है वो स्केल हो चुका है. ठीक है जी, विद द सेम मीन एंड सेम स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अब मैं चैट में आता हूँ. नाउ आई नीड टू फिट द मॉडल using PyTorch, and this model should be a classification model.
using neural networks. Okay, give me the code for that. Not only that, have I used the train test split here? Yes, I have. Okay, cool. Also give me the what train and test plots and matrix plots 2. चलें जी, देखते हैं हमें इसके कोड में क्या क्या देता है ये. क्या हमने डेटा कन्वर्जन कर ली है? But the data is already converted, as we can clearly see. It is here converted. There is no categories. These are all already encoded integers. Okay. But we don't need data conversions. Our data is already encoded in integers. अब वो टेंसर में कन्वर्ट करेगा इन न्यूमेरिकल पाइथन अरेज को. यस, क्योंकि टेंसर के बगैर तो वो काम नहीं कर सकता. And after that we need to neural network architecture. I think it's the low level API. Yes, it is. पूरी की पूरी क्लास डिफाइन हो रही है. लीनियर है, ReLU फंक्शन है, ड्रॉपआउट है, लीनियर एंड सिग्मॉइड, एंड दैट्स ऑल. चलें जी, उसने लिस्ट क्रिएट कर दी हैं ट्रेनिंग के लिए. ट्रेन टेस्ट. ओके, कूल. और ये हमारी परफॉर्मेंस का कोड है जी, जिसमें प्लॉट्स आएंगे. दैट्स इट. चलें जी, रन करते हैं. पहले इसे तो रन कर लें. अब इसे रन करते हैं हम. ओके. Test accuracy is 0.9930. Wow. So this is our confusion matrix and these are the plots, and this is the classification report. Okay, that's good. ये तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया है. एंड मॉडल कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा है? Here predicted 0 है, actual 1 है. So there are 5 instances for which the model is predicting 0 but it is actually 1. It means कि मॉडल कह रहा है कि भाई रिस्क नहीं है, लेकिन एक्चुअली में रिस्क है for the 5 instances. Yeah, that's it. Okay. And और इसमें हम क्या कर सकते हैं? Now I need 2 strategies of parametric optimization for this. Yes. The first one is manual search. पैरामेट्रिक ग्रिड दे दी गई है और ये लें जी. चलें जी, यहाँ से सर्च करते हैं. Where is my notebook? There it is. और यहाँ पे नेम एरर आ रहा है. अब वो नेम एरर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी?
कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये डिफाइंड ही नहीं है, और इसका मतलब ये भी शायद ना चले कोड। ठीक है जी। सो मुझे पहले उसे ये नेम एरर कॉपी पेस्ट करके देना पड़ेगा। उसने अपडेटेड कोड दे दिया है, वो पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। और ये है जी PyTorch इम्प्लीमेंटेशन रैंडम सर्च। ओके, इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, आ जाए। ज़ीरो पॉइंट 9930। और यहाँ पे टेस्ट एक्यूरेसी क्या है जी? 0.9930। एंड आफ्टर दैट ये रैंडम सर्च चल रही है अभी, इसमें भी देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। इंपोर्ट्स डेटा फीचर। मैं तब तक मार्कडाउन फाइल कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी। यहाँ से बात स्टार्ट होती है जी। स्टैंडर्ड स्केलिंग आ जाएगी सबसे पहले तो। And after that converting to the tensor. There it is. PyTorch converting to the tensors, right? टेंसर्स में लाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। न्यूमेरिकल रेस हैं। आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहा है जी यहाँ पे वो। हेयर इट इज़। और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है जी? ट्रेनिंग विद हिस्ट्री ट्रैकिंग। पूरे मॉडल की हिस्ट्री डेवलप हो रही है यहाँ पे with the 50 epochs or 50 iterations, and after that performance visualizations, जिसमें training and test plots आ गए हैं, and it is also the confusion matrix. Then we have the search strategy. The first one is manual grid search, जिसमें मैनुअली सर्च किया जाता है। पैरामीट्रिक ग्रिड दे दी जाती है, 1 2 1 2 और 1 epochs 20। सो इन ग्रिड्स को सर्च किया जाएगा फॉर द 20 epochs। And after that I have another which is automated optimization with ReLU, लेकिन इसको उसने रिप्लेस कर दिया है रैंडम सर्च PyTorch इम्प्लीमेंटेशन। एंड ऊपर वाली स्ट्रेटजी हमारी मैनुअल ग्रिड की स्ट्रेटजी है, और नीचे वाली ये है जी रैंडम सर्च। हियर इट इज़। सो लेट्स सी इनमें से बेस्ट कौन सी आती है। We really need to find out that so that we can see. Neural networks really outsmarted the tabular data, as we can clearly see. Here we have the if we deal it as a regression problem, we have this 0 point lowest RMC 0.1439, and for the best model we have this, which is basically 89% वेरिएशन एक्सप्लेन किया जा रहा है, और हमने इस मॉडल की एक्यूरेसी नहीं फाइंड की, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट एक्यूरेसी वो 99% दिखाई जा रही है।
Here it is, 0.99330, with these plots which are quite consistent, and the confusion matrix. And random search is still going on, or it is done. Random search is quite random, as we can clearly see. It is quite random, yes. Maybe we have low iterations, that's why it is happening. We need to increase the number of iterations, so neural networks need iterations to learn the patterns in the data. So let's see if it helps. I don't think so this is a good search strategy, because it is giving me too much of the ups and downs in the accuracy. I'm gonna change this. It is not consistent, and it is not exploiting the parameters. Yes. It's just not. Optuna, retune with early stopping. Okay, I'm gonna select this. Yeah, Bayesian optimization, Optuna for Bayesian optimization. There it is. और चलें जी, इसे करते हैं जी, इसका नेम चेंज कर देते हैं हम, Optuna for Bayesian optimization. और यहाँ पे इस चीज़ को मैं पेस्ट करके कितने ट्रायल्स दिए गए हैं इसके जी? 30 ट्रायल्स हैं, और हर ट्रायल के अंदर क्या नाम है, कितनी बॉक्स हैं? 20 बॉक्स हैं. यस, टेबुलर डेटा, इस वजह से काम ये स्पीड में हो रहा है. यही कंप्यूटर विजन का डेटा होता तो अलग पता जाता, फिर हमें जीपीयू इनेबल करना पड़ता, और फिर काम ही और तरह से होता. अल्हम्दुलिल्लाह. So we are reaching the accuracy of 0.994 in the 21st trial. In the grid search, the best accuracy is 0.9930, and I'm just waiting for this search strategy to end so that I can really tell you that what is the best test accuracy that I have achieved so far with the best combination of the parameters. And this is, yes, here it is. So we have best trial summary. I'm gonna separately fit a model with this. Yeah, use this and fit the model. चलें जी. इन पैरामीटर्स के साथ हम मॉडल को फिट करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रेटजी गई है हमारी.
initialize and fit the best model. Okay, ये भी हो गया. And then after that I'm gonna do this and final evaluation and matrix plotting. Control A, Control X, markdown insert करेंगे, shift 3 and then this, and after that I'm gonna copy the code and paste here. और ये कितनी epochs के लिए रन होगा? For the 100 epochs. Yeah, इसलिए टाइम ले रहा है, लेकिन हो जाएगा, इतना लेंथी नहीं है. ये लें जी, प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 के ऊपर है और ये 0 के ऊपर है. सो फाइनल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स, और मुझे इसने टेस्ट एक्यूरेसी नहीं दी कि दी है मुझे 0.9940. ओके, दैट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड. इसके अलावा और तो कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए हो. यस, दैट्स ऑल. नोटबुक भी प्रिपेयर्ड है. अब इसका वर्जन सेव करना पड़ेगा शेयर करने से पहले. इसे क्लासिफिकेशन हेड में लेके जाते हैं, यहाँ से वर्जन में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंड सेव वर्जन, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.